Welcome to all of you to this fifth series of our mental health conversation. And today we have chosen a very important topic, that is how we can become mindful of this nature gap, or how we can reduce the gap between us and the nature. Well, ever since we have created artificial intelligence, or created gadgets like mobile phones, all electronic gadgets, we have been distanced with nature and with ourselves also. Now, the result of which, we are losing the ability to have patience, ability to listen, ability to concentrate, and finally, ability to be happy. So, it is very important for us to find ways and means to come near the nature. Now, today we have a very important people, experts in various areas, who would like to share their own experiences. They are of different areas, and they would be sharing their own experience, that with that particular activity, how could they come closer to nature. Well, we have to start with Dr. Alok Pandey from Hindi department, and a very versatile, dynamic person. He has been vice president of Delhi University Teacher Association, and now he is also a member of Academic Council. And the best thing is that he has always been associated with, service, social service. He is now the program officer of NSS of our college, and we would have the chance to hear from him that how this social service, okay, could help him align with the nature. Then we have, Shreya Sinha. Shreya Sinha is a faculty in our college, and she is a dancer. And we would also like to know that practicing the dance, what kind of feeling she could experience, and how this particular dancing activity brought her closer to nature. Another stalwart, we have Dr. Madhu Bhatta from English department, and she has developed a wonderful art of painting. And you know that this painting art you cannot have without imagining a beautiful nature. So we would be interested in knowing that how she, relates her painting with nature, and what is the impact upon her mind while doing the painting. We have Ishwani Kaur. She has been associated with, music, for the last, about about 6 years in the college itself. Ever since she joined as a student, she was busy in this musical activity, organizing programs, etc. She herself, she has been trained by her mother. Mother is a wonderful singer. So since childhood, she is engaged with musical activities, and so we will have an opportunity to hear from her that how music has helped her in getting proximity with nature. Another stalwart, we have Archana Jamaica. She is from philosophy department,
and she will throw some light on her hobby cooking, how cooking has helped her, you know, in developing appreciation for nature. Okay, so we will have Archana Jamaica also, and then we have Nidhi Mathur. Well, she has not been trained in the music, but she loves various, programs in our college. She is courageous enough, and she performs very easily. So she is the one who enjoys music very much, and she never hesitates in performing at various occasions. So we would like to hear from her also that what has been her experience. So this is how we are going to start, and the problem is that how to reprogram, how to reset your nature program so that you come closer to the nature. Okay, as I've already told you that we have been victim of uh, getting distanced from nature, and it is so important to develop proximity, because all over the world research is going on. There is one organization called Heart Math Institute in California. Now they are doing research for the last 10 years, that what is the impact of you know your company with trees, uh, on your peace, how trees impacts your peace of mind, if you are if you are having an association with trees. So similar kind of things are going on all over, and in this series we have a really wonderful, panel. We would like to hear from them. To start with, I would like Ishwani Kaur to share her experience. Okay, since childhood she is involved in music and everything. She likes it so much. So how music has played a role in her life, Ishwani? Thank you so much, sir, for this opportunity and inviting me over here. And this topic is I don't know. Matlab, since I've joined School of Happiness, I am kind of shocked, and I'm kind of surprised that I'm relating music with lot of topics, music with fitness, music with mental health, and now music with the nature. So it's a privilege to speak upon such topic, and music and nature, how they are correlated with each other. And I think I'll try to put light on it, and according to my experience, what I've been through, and what I've um, since my childhood I've been into music, and I'll try to relate it to the nature. uh, so we are so blessed that we are in India, and India is a blessed country to have 6 seasons. If I'll talk about it, one is spring, Vasant Ritu, summer, monsoon, autumn, pre-winter, and winter. So every season has particular time. Every season is designated with the particular month. And you won't believe that in Indian classical music, we have ragas for every season. For every season, for every time of every time, every hour, we have different rags. So when we sing, we get connected through the nature. As I was also telling earlier, that Tansen used to sing Rag Deepak and Rag Malhar to call rain, right? So if ragas are sung perfectly, it does what it meant to be. So also, there are many practices, or there are many hard work
done under the trees or within the nature. People prefer singing alone in the nature because that way they feel connecting more to the nature, and also it enhances their practice. So if I give you some example of whatever season and what all rags are sung during those seasons. So even if the spring season, I'll start with the spring season. Rag Basant, Bahar, Hindol are some rags which are sung in the spring season. When you listen those rags, it feels like, something is purring inside you and you feel so good. If I talk about in Gurdwaras, whenever this spring season starts, you can hear all the ragis in the Gurdwara singing kirtan based on Rag Basant. Right. Also, it has very much impact. Also, our parents also impact this, thing in us. They always keeps us telling that this is Rag Basant, this is spring season. We recognize spring seasons through rags. There are some people who recognize rags from the season, but we recognize, seasons from the rag. If I hear Basant in the month of February to April, it gives me a feeling that, this is spring season. Then in the summer, Raag Marwa, Raag Sarang, Raag Deepak. If you've ever been to Rajasthan, or if you've ever listened to the folk culture of Rajasthan or the music of Rajasthan, Kesariya Balam, Padharo Mare Des, that is on Raag Sarang. Raag Sarang is basically, it gives us the Rajasthan folk vibes. Why? Because it's the rag of summer. Also, it is meant for the it's meant for the afternoon time. It's a rag for the afternoon time and extreme heat. So when you sing this rag, you feel so happy. Even you even enjoy the summer. So if I just sing Kesariya Balam, you will get this feeling that it's sand over here. You can see the camels walking and all that stuff. Then Rag Monsoon, the season monsoon. So under the monsoon or in the monsoon, mostly Rag Meghmalar or various varieties of Rag Malhar are sung, and it is believed that Tansin used to sing this song just to call the rain. So, if ragas are sung perfectly, they will do what in the particular season they will do what it meant to be. Then in autumn, Rag Bhairav. Uh, then pre-winter Raag Shri. Raag Shri is the primest rag of Indian classical music, and it requires very deep understanding of music. A normal person cannot sing or cannot do justice with Raag Shri. Raag Shri is meant to be for those who devoted their lives in the music. So it is the prime rag. It comes in the exclusive category of Indian classical music. So pre-winter is basically a time where you feel kind of low, you feel the good wind, winter winds, you feel those winds. Sometimes it's boring, you get bored, है ना? So Rag Shri is the rag that denotes that you need to meditate a lot. So Rag Shri is all about deep, deep swars, and when you sing it, you feel like you are connecting to the nature and your body is connecting, responding to those rags. Then comes the winter. The winter, the rags which are sung are like malkons. So these are the ragas that are basically sung in these seasons. So if we sing these rags, we feel connected to the nature. And also the nature has very much, very huge and very impact on what we sing and how we do the justice with the ragas. So in music, I can uh, in brief, I can say that music is directly linked with the nature. If there is no nature, if a person does not love nature, or does not allow to themselves to uh,
go see and be with the nature, that person cannot sing. People in the music industry, or people who are pursuing music, they usually tend to you know take their time off their phones and spend it in the nature, or in a garden, or sitting under the tree, because that thing enhances and promotes music urges in you. So that's it from my side. Thank you so much. Wonderful. Ishwani, you have been my good student also, and I never knew that side by side you are enjoying such wonderful moments also, and a very good message that you are giving to all the youth, that along with your studies you can very well pursue all these hobbies also. That will make you a wonderful person, that will bring you closer to nature, and as such you have performed so well in academics also, and now that you have become a faculty also. So indeed, highly informative and highly enlightening views we got here. We have now a very senior faculty, Dr. Madhu Bhatta, in the English department, and the beauty is that uh, very suddenly she opted for this painting, and then she came to know that she had this hidden skill in her. During lockdown, when she didn't have much to do, she started doing that, and now she is a wonderful painter. So the question to you is that how this particular art, was so attractive to you, and then finally you became a wonderful painter. So, what was the role of nature in that? Because you must be imagining, those beautiful aspect of nature, and then you are bringing that imagination into your painting. So, you must have had a wonderful experience. So, we would like to know something from you. Thank you, sir, for including me in this panel discussion. Um, I more than imagination, I had been actually visiting the beautiful places like sea beaches of Bahama, and also Kamayu region, because my husband has some work there. So Uttarakhand, I used to visit. I was a regular visitor of the hills and the beaches. So the beauty of the nature inspired me a lot. I always looked upon nature something like as a spiritual teacher, and also the aesthetic beauty I used to enjoy. I felt that the aesthetic beauty can make us thoughtless for some time and make us feel one with the divine. The everything in nature, the high mountains used to give me the feeling of the height of the height used to give that how human beings egoistic behavior make them feel that they are so big, so ego should come down. And also the creations of god, the god has given us such a beautiful universe to live in, so the admiration for the divine increased, and the kind of condition, the kind of beauty that inspired a kind of moments when one becomes a living soul, as Wordsworth used to say, that one becomes a living soul in the company of nature. So there are no thoughts. We are just enjoying nature. The flowing rivers, make us feel like the love of God is flowing to everyone. Everything in nature tells us something. The trees that are always as if they are like God, they are giving shade, they are giving fruits. The beautiful flowers
flowers, as if the God has created every flower has so many different colors, as if God has dressed them in different colors, just as human beings are dressing themselves. So they are already dressed with so many beautiful colors. So everything used to, you see, silence the thoughts. The thoughts are no more there. So that aesthetic beauty, when in the lockdown period, I started missing it because we could not go anywhere. We have no work. Even the colleges were closed. So suddenly I started doing painting, and when I could paint like child, I started feeling a kind of feeling of joy like a child. It was basically the admiration for the divine, that God divine has given us such a beautiful nature. Let me see how can I paint the hill, how can I paint the this waterfall. So every day I used to think, let me paint a waterfall. So in that way, and I used to have some photographs sometimes in front of me, but the real scenes were always there in my mind. So I started painting, and it was a great joy whenever I could paint. Now when I look at the my first initial paintings, I felt they were not so beautiful, but they gave me so much joy that I can also do something. But at the same time, the appreciation, the admiration for divine increase, that God has gifted us with such a beautiful universe, so large, so many large spaces are covered with beautiful scenery of nature. So all that admiration used to come when I used to paint. I felt, no, still it's not so good. Let me do something more to add beauty to this painting. So I tried my best. So I always used to think that how much God is caring for the human beings. Before He sent human beings on this earth, this beautiful earth was created. So this feeling for divine always helped me to paint better. Thank you. वंडरफुल मैडम। आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है हम लोगों को कि अगर आप में कोई इस तरह की प्रतिभा होती है तो आपका सारा परिवार आपकी मदद करता है। और मैंने ये देखा कि आपके पति, आपके बच्चे, इन सबों ने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत सराहना की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको भी इस तरह का सहयोग और इस तरह की सराहना चाहिए किसी को भी, तो कुछ एक अनोखी प्रतिभा को लाना ज़रूरी है। उससे आप भी खुश होंगे, घर वाले भी खुश होंगे, और जो देखने वाले पेंटिंग हैं वो भी खुश होते हैं। हमारे बीच में बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें डॉक्टर आलोक पांडे ये हिंदी विभाग में हैं और ये सही माने में समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है, हम सबों की जिज्ञासा है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि इन्होंने इन्हें प्रेरित किया इन चीज़ों के प्रति। और आप कोई भी कार्य तभी करते हैं जब आप लाभान्वित महसूस करते हैं, ऐसे तो आप कोई भी काम नहीं करते। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आपको हमेशा समाज सेवा के प्रति आकर्षित करके और आपको सफल किया? और जब आप करते हैं, होता क्या है कि पुरुष और प्रकृति, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आज पुरुष और प्रकृति अलग अलग हो गया है, तो हमें उसको एक साथ लाना है, उसको नज़दीक लाना है। आप समाज सेवा में संलग्न हैं, तो मेरी आपसे इच्छा है जानने की कि आप किस तरह का लाभ महसूस करते हैं। धन्यवाद सर। और जितने अच्छे तरीके से अभी मधु मैम ने, ईश्वनिक ने जो अपनी बातें रखी हैं, मैं भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाऊंगा। और आपका आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। मैम, मधु मैम अभी बात कर रही थी मेडिटेशन की, भगवान की, और भगवान ही प्रकृति है। हम सब ने पढ़ा भी है, सुना भी है कि भगवान में जो 5 वर्ण हैं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि,
और न से नीर। यही 5 तत्व है और उसी को तुलसीदास कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा। उसी को जायसी आकर कहते हैं कि मानुष प्रेम भय ही बैकुंठी, नाही तो काह छार भरी मुट्ठी। तो जो मानवीय प्रेम है वह प्रकृति सिखाता है। यदि आप पुराण की ओर जाएं तो पुराण में सीधा सा लिखा हुआ है, आप भले ही उसे मिथ मान सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जितना पेड़ लगाएगा स्वर्ग में उतना ही अच्छे से वो हर्षोल्लासपूर्ण रहेगा। आप इसे मिथ मान सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये फैक्ट है, ये बिल्कुल तथ्यात्मक है। एक मत्स्य पुराण में एक और लिखा हुआ है, एक लाइन और बता के फिर मैं बताता हूं। क्योंकि एक वृक्ष जो है ना, एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, अर्थात यदि आप एक वृक्ष की सेवा कर रहे हैं तो आप 100 पुत्रों की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए यदि आप थोड़े से चले जाएं तो हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है, और यदि मंगल हटाना होता है तो हम किसी के साथ करके शादी भी करा देते हैं। तो ये ऐसे नहीं आया। नेचर मेक्स अ मैन परफेक्ट। आइंस्टीन को देखें आप, यदि वो गुरुत्वाकर्षण को देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लाते हैं, यदि वो नेचर को नहीं देखते, प्रकृति को नहीं देखते, तो इतना बड़ा लॉ हमारे सामने नहीं आता। धरती हमारी माँ है, आसमान हमारा छत है, पेड़ पौधे हमारे आहार हैं, सूर्य चंदा किरणें दीपक हैं। और यदि हम इनसे अलग हट जाएं तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाना है तो हमें प्रकृति के पास जाना होगा। लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा सर, कि जब से हम वैज्ञानिक होते जा रहे हैं, हम जितना वैज्ञानिक हो रहे हैं उतना ही हम नेचर से दूर हो जाते जा रहे हैं। और उस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगाना होगा। और लगाम लगाएगा कौन? हम और आप, हमारी शिक्षा, हमारा परिवेश, हमारी जलवायु। व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना फलता फूलता जा रहा है कि वो प्रकृति का दोहन कर रहा है। और हर अति का अंत होता है। अत्यंत शब्द जो बना इसीलिए बना कि हर अति का अंत होता है। और मुझे लगता है कि जो हम गंगा सफाई कर रहे हैं, या 5 जून को हम एक दिन पर्यावरण दिवस मना लेंगे, उससे बहुत कुछ नहीं होने वाला। यदि हम प्रकृति से सीखना चाहते हैं, प्रकृति को जानना चाहते हैं, तो प्रकृति को अपने जीवन में जीना होगा। हम में से कितने लोग, देखिए हम में से बहुत, हम जो बाहर अपने घर के गमले लगाते हैं ना, वो भी हमारे लिए स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। मेरे घर में 100 गमले लगा रखे हैं तो हम बताते हैं कि हमने 100 गमले लगा रखे हैं। तो जब तक इस मानसिकता से हम दूर नहीं होंगे, दिखावेपन से दूर नहीं होंगे, और वैज्ञानिकता जो तर्क है, देखिए मैं साहित्य का आदमी हूं, साहित्य में आस्था और तर्क, बहुत अंतर है। आस्था और तर्क में तर्क बहुत आवश्यक है, लेकिन आस्था भी कुछ होनी चाहिए। गांव में हम आग की पूजा करते हैं, जब हम आग जलाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें भी आग की पूजा करते हैं। हम धरती की पूजा, अभी भी जब हम घर करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं। हम भूमि पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन उस भूमि के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं इसको जानना जरूरी है। हम अग्नि पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उस अग्नि के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, और उसी का रिवर्ट होके जब हर अति होता है ना, आप कहते हो सुनामी आया, सुनामी ऐसे नहीं आया, भूकंप आया ऐसे नहीं आया। इतने ज़्यादा जो हमारे यहाँ प्रकृति
जब नाराज होती है, जब तांडव रूप धारण करती है, आप ही का यदि हम दोहन करते रहें तो आप कब तक सहन करेंगे? तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले मैंने देखा है अपनी आंखों से, जब 93 में मैं दिल्ली आया था, तो मैं बताऊं सर आपको, ये एक रास्ता हुआ करता था, आप तो जानते हैं, इस आईटीओ पे एक छोटा सा होता था। अब मैं नोएडा से आया करता था, बहुत कम घर हुआ करते थे, मयूर विहार उस समय बनना शुरू हुआ था, छोटे छोटे से गांव थे, उधर जो आजकल सूरजपुर है, ग्रेटर नोएडा है, गांव था और सब कुछ। और आज देखिए, जितने पेड़ थे सबको हमने खत्म कर दिया। हमारे यहाँ एक साहित्य में एक पंक्ति है कि हम जितना प्रकृति के साथ जिएंगे, प्रकृति हमारे साथ जिएगी, और प्रकृति से हम जितना दूर भागेंगे, प्रकृति उतना दूर भागेगी। तो हम प्रकृति से दूर भागते जा रहे हैं। हम सबका पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि जो पर्वत है ना सर, वो पर्वत ऊंचा नहीं है, वो शीश उठाकर कहता है कि मेरे जैसे ऊंचे बनो। अभी बहुत अच्छा गाने की बात करते, इसमें एक गाना है ना, पतझड़ सावन बसंत बहार। पतझड़ मौसम इसलिए आता है कि आपके अंदर यह सिखाता है कि बच्चा संभलो, आगे संभल के फिर नए नए पौधे लगाने हैं। हमने आम का पेड़ देखा है ना, प्रकृति में बहुत कुछ सिखाती है। आम का पेड़ जब लदा हुआ होता है तो वो शालीनता सिखाती है। आम के फल जो होते हैं ना, जितने मीठे होते जाते हैं, जब कच्चा आम होता है तो टाइट होता है, जैसे जैसे वो पकता है उसे झुकता जाता है। तो आम का पौधा हमें सिखाता है कि जैसे जैसे आपके अंदर विद्वता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप अच्छे होते जा रहे हो, विनम्र होते जा रहे हो, उतना ही आपको शालीन होना है। लेकिन आज देख लीजिए जिस समाज में हम रह रहे हैं, कि क्या हम शालीन हो रहे हैं? हम प्रकृति से सीख रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। फिर पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी हमें धैर्यवान बनाती है। पृथ्वी कहती है कि आप धैर्य बनो। पृथ्वी हम सबका बाहर लेकर बैठी हुई है। तुलसीदास जब ये कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, यहाँ हम नारी पे हम बात नहीं कर रहे, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए चारी, वो परिपक्वता की बात करते हैं। जो जितना परिपक्व होता है वह उतना ही धैर्यवान होता है, और किसी भी विषम परिस्थिति में संभलने के लिए हौसला देता है। तो हमें धरती से इसको सीखना चाहिए। धरती हम सबका बोझ ले। आप देखिए ना, हम बस अंतिम लाइन कह रहा हूं मैं, कि हम आम के पेड़ पे डंडा मारते हैं तब भी हमें आम मिलता है, वह उल्टे में आपको डंडा नहीं मारता। लेकिन यदि मनुष्य, तो इसीलिए यदि आपको सेवा करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें प्रकृति की सेवा करनी होगी। उसमें आस्था का भी ध्यान देना होगा, विज्ञान को भी लाना होगा, तर्क को भी देखना होगा। केवल और केवल एक विषय को आके लेकर यदि हम बढ़ेंगे तो हम नहीं जा सकते। और इन सब के बीच मनुष्यता की भावना, जिस दिन हम सारे जीव जंतु को मनुष्य मान लेंगे, और जायसी की पंक्ति को हम, जिससे मैंने शुरुआत की थी कि मानुष प्रेम भय ही बैकुंठी, ना ही तो काह छार भरी मुट्ठी, मानवीय प्रेम ही, प्रकृति के साथ प्रेम ही हमें बैकुंठ ले जा सकता है। नहीं तो हम मिट्टी के हैं, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है। तो सच्ची सेवा यदि आपको करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, मैं तो गांव का आदमी हूँ, मैंने खेती की है, हल चलाया है, मतलब सब कुछ किया है। मैं जानता हूँ जो आनंद आज भी प्रकृति के साथ है वह और कहीं नहीं मिल सकता। बहुत बहुत आभार सर। आलोक जी धन्यवाद। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, और वो उत्तर ये है कि आपका प्रकृति के साथ सानिध्य, प्रकृति के विषय में आपकी समझ, और जिस तरीके से प्रकृति को आपने आत्मसात किया,
वही एक मूल कारण है कि आप में सेवा की भावना इतनी ज़्यादा है। बात यह है कि सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, सबके लिए घटित हो रही हैं, लेकिन कितनी गहराई से आप उसको देखते हैं और महसूस करते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि हमारी सोचने की, देखने की, सुनने की जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, सबकी क्षमता कम होती जा रही है। वरना जिस तरीके से आलोक जी ने बताया, चीज़ों को समझा और परखा, अगर सारे लोग इस तरीके से उसके महत्व को, प्रकृति के महत्व को समझें, तो उन्हें कितना लाभ हो सकता है। लेकिन हम प्रयास नहीं करते। हम तो वैज्ञानिक युग में जिसको हमने बनाया है उसी के अधीन होते जा रहे हैं, उसी के गुलाम बनते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमें उसको अस्वीकार करना होगा, उसी में हमारा कल्याण है। अभी कोविड ने हमें बताया बहुत कुछ, आगे भी पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। बहरहाल हमारे सामने एक मेरी विद्यार्थी है, अब वो फिर फैकल्टी हो गई, श्रेया सिन्हा। जिस तरीके से ईश्वनिक के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि अपने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ कुछ और भी प्रतिभाएं हैं इसके साथ, उसी तरीके से श्रेया सिन्हा के विषय में भी मुझे यह पता नहीं था कि पढ़ने पढ़ाने में तो हैं ही निपुण, लेकिन इनका एक हॉबी है डांसिंग का, और अभी फ़िलहाल इन्होंने एक अवार्ड भी लिया है इसमें। तो हमें यह जानने की उत्सुकता है कि ये जो डांसिंग है, ये आपको किस तरीके से लाभान्वित किया, आपको इससे किस तरह का फ़ायदा हुआ? थैंक यू सो मच सर। बेसिकली डांस या फिर म्यूज़िक इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और आजकल हम सब कोई भी बीमारी हो, सब सप्रेशन से, बहुत सप्रेशन स्ट्रेस एक बहुत मेजर रीज उसका कारण है किसी भी बीमारी का। सो डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और जैसे मैम ने बताया कि अलग अलग राग होते हैं अलग अलग सीज़न के, वैसे ही डांस में क्या है, देर आर 12 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक इमोशन है जो हर इंसान के अंदर होता है। और डांस वो एक्सप्रेशन है, वो उस चीज़ को शो करने के लिए, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स सॉरो, वेदर इट्स एंगर, एवरीथिंग। डांस इज़ अ एक्सप्रेशन टू शो एवरीथिंग। बिसाइड्स डांस और नेचर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन इसलिए है क्योंकि देर इज़ डांस टू सेलिब्रेट एवरीथिंग। वेदर वेदर यू आर इन, अगर बारिश हो रही है तो हम लोग देखते हैं पिकॉक को एसोसिएट करते हैं कि कैसे डांस को, म्यूज़िक को, डांस को एसोसिएट करते हैं बारिश को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। जब खेत में लोग डांस करते हैं, लोग अलग अलग पिकनिक पे जाते हैं, अलग नेचर, वहाँ पे जाके लोग डांस करते हैं। और जहाँ तक इंडियन क्लासिकल डांस की बात है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग हमेशा डांस करने से पहले नमस्कार करते हैं। चाहे कोई भी डांस फॉर्म हो, चाहे कथक हो, भरतनाट्यम हो, कोई भी डांस फॉर्म हो। इंडिया में मोस्टली 7 क्लासिकल डांस फॉर्म है। हर डांस फॉर्म से पहले एक नमस्कार होता है। उस नमस्कार में जितनी भी मुद्राएं होती हैं, सबका मतलब अलग अलग होता है। और सबका मतलब यही होता है कि कैसे आप, जो भी सर ने बताया कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कैसे आप सबको नमस्कार करते हैं अपने डांस से पहले। और उसमें सबसे ज़्यादा आप जो नमस्कार करते हैं वो पृथ्वी को करते हैं, क्योंकि आप उन पे बोझ डालकर डांस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप उसे नमस्कार करते हैं। तो डांस एक ऐसी चीज़ है जो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। बिसाइड्स एक और चीज़ है, जहाँ मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, उन सब में हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं कि हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। या तो हम लोग बहुत पास में सोचते रहते हैं या तो फ्यूचर का, बट हम सब ये सब चीज़ें मेडिटेशन भी इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। एंड डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि जब सब लोग डांस करते हैं, हम सब लोगों ने ये फील किया है कि वाई वी गो टू पार्टीज एंड डांस, उसके बाद हम बहुत इन्जॉय, वी फील लाइक वी आर थ्रिल्ड अप। उसका रीज़न ये होता है दैट वी आर इन द मोमेंट। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल डांस, वहाँ पे हम इन द मोमेंट ही होते, इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन।
थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट से देखें तो न्यूरो साइंस में एक थेरेपी है विच इज़ डीएमटी, डांस मूवमेंट थेरेपी, और वो हमें एसोसिएट करता है। स्पेशली कहा जाता है कि आप डांस ओपन स्पेस में अगर करें तो उसका बहुत फ़ायदा है। क्योंकि एक टर्म है हमारे डांस में विच कहते हैं भूत शुद्धि, कहते हैं कि अगर आप डांस ओपन स्पेस में करें तो आपको पांचों एलिमेंट्स जो मिलते हैं उससे आप बहुत रिजुविनेट होते हैं, और वो आपको आपके इंटेलेक्चुअल इमोशनल सारे बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थैंक यू सर। धन्यवाद श्रेया। हमारे इस गोष्ठी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि इन आयामों के बारे में, ऐसा नहीं कि लोगों को पहले पता नहीं था, या जो हमारा युवा वर्ग है वो इन चीज़ों, बहुत बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस गोष्ठी का उद्देश्य है कि फिर से इन आयामों के महत्व को उजागर करना, कि अगर कोई संकट की स्थिति है, विपदा की स्थिति है, कि आप प्रकृति से दूर होते जा रहे हो, तो पुनः हमें लौटना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। तो गार्डनिंग है, कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं नाम नहीं ले पाया, वो सब बहुत महत्व रखती हैं। हमारे बीच में अर्चना जमाइता है, वो फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट की में फैकल्टी हैं, और मैंने ये देखा कि इन्हें रुचि जो है कुकिंग में बहुत ज़्यादा है, खाना बनाने में। और जहाँ तक हम सबको पता है कि खाने का सीधा सीधा संबंध जो है सो वो प्रकृति के साथ है। जो भी फूड आप लेते हैं, जो भी लेते हैं, आपको ध्यान होगा कि जो भी सब्जी आप बना रहे हैं वो सब्जी धरती माँ के द्वारा ही है, और सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। तो आपको किस तरीके से जो कुकिंग है वह एक साधन के रूप में आपको दिखाई देता है प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए। तो चूँकि अर्चना जी फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट की भी हैं, तो मैंने सोचा कि ये बहुत उपयुक्त होंगी, इनसे पूछा जाए कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। अर्चना जी। थैंक यू सर, स्पेशली ये टॉपिक देने के लिए ऑन सब्जेक्ट ऑन कुकिंग। तो अभी थोड़ी देर पहले आलोक सर बोल रहे थे जो पेड़ होते हैं वो 100 पुत्रों के बराबर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ माय जो चाइल्डहुड रहा वो गांव में ही रहा विद माय पेरेंट्स। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ पास में होता है उसका अप्रिशिएशन आप नहीं करते हो तब मेरा उसका वर्थ जो है मुझे मालूम नहीं था। एंड माय मदर शी लव्स नेचर, उसको पौधे लगाना अच्छा लगता है, फिर खेती बाड़ी करना अच्छा लगता है। एंड वन डे व्हाट हैपेंड, कुछ कारण से somehow when the government wants to have some project and all, they have to kind of cross a certain kind of border and they have to destroy nature. तो उसमें से कुछ पेड़ जो है हमारे घर का वो भी कट जाता है। देन आई सॉ माई मदर ग्रीव्ड अबाउट इट, यू नो, इसको मैंने अपने मतलब बच्चों जैसा पाला है इस पेड़ को, एंड सडनली समबडी जस्ट चॉप्ड इट। मुझे समझ में नहीं आया। देन फॉर माई एडुकेशंस एंड देन नाउ जॉब आई हैव टू मूव टू द सिटीज़। देन नाउ मुझे ऐसा रियलाइजेशन होता है कि नेचर कितना ज़रूरी है हमारे लिए फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड आवर फिजिकल हेल्थ। तो आप इससे आप कैसे कनेक्ट करोगे? आपके पोस्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है इतना स्पीड से चलता है, इतना रश में रहते हो कि यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, नेदर यू हैव टाइम फॉर योर ओन फूड। बाकी तो छोड़ दो आप, लाइक 9 से 5 बजे, 9 बजे आपको कॉलेज तक पहुंचना है। सो आप क्या लेते हो ब्रेकफास्ट में? टी एंड ब्रेड, वही कॉमन रहता है। फिर लंच में जो भी कैंटीन में मिल गया, एंड कैंटीन में जो भी मिलता है
फिर घर जाके देन अगेन यू, क्योंकि आप थके हुए होते हो तो यू डोंट थिंक अबाउट कुकिंग, यू थिंक अबाउट लेट्स जस्ट बाय समथिंग चीपर जो आप 50 या 100 रुपये में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप पकाने के सोचते हो देन इट विल कॉस्ट यू मोर मनी देन बाइंग। फिर देन यू सी द रिजल्ट इन योर हेल्थ ऑल्सो, आपको स्टमक एसिडिटी हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, गैस हो जाता है, ब्लोटेड हो जाता है। एंड cooking I did not start as a hobby but as a survival. Then I started thinking about let's have good diet, and this is something my mother was is a very good cook. तो मैं सोचा चलो मैं भी कुक करना शुरू कर देती हूँ, and my mother always insist me कुकिंग करके खाओ, बाहर का मत खाओ. Then I started with the breakfast. स्मॉल यूट्यूब देख के ये देख कर प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया. फिर देन इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट वेरी एनलाइटनिंग, बस ये है कि पका मिल जाए खा लेते हैं. देन वी हैव हम हॉस्टल में ही रहे तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन. तो हम लोग साथ में आए, साथ वी केम टुगेदर फॉर ब्रेकफास्ट एंड डिनर. वी वुड प्रिपेयर समथिंग. And some were good in vegetables, they have good knowledge of vegetables, some have good knowledge of rice, some have good knowledge of chutney. तो जब भी खाना बनाते थे तो कहानी सा बनता था, कहानी सा, राइस का कहानी, फिर वेजिटेबल्स का कहानी, वेजिटेबल कौन सा फ्रेश है, और वेजिटेबल को देख के आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन सा मिट्टी से आया है, कौन से स्टेट से आया है. देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग इंटरेस्ट, क्योंकि आप जब चावल देखते हो, जब चावल को ऐसे टच करते हो, फूड को जब टच करते हो बिफोर कुकिंग, नाउ आई अंडरस्टैंड फ्रॉम विच सॉइल इट हैज़ कम, और आप इसको कैसे पकाना है, कितना पानी देना है ताकि ये आपके हेल्थ के लिए मतलब आपके स्टमक को ख़राब ना करे. एंड अगर इसमें आप खुशबू लाना है, एंड राइस में सॉइल का खुशबू रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा सॉइल का एरोमा है उसमें. और फिर स्पाइसेस, अगर आप जब स्पाइसेस का आप स्मेल लेते हो, यू गेट द स्मेल ऑफ नेचर. तो इसी तरह लाइक धीरे धीरे जो सर्वाइवल के लिए शुरू हुआ था, इट बिकेम अ हॉबी नाउ. और एक अच्छी बात यह है, आप जब कुछ पकाते हो और कुछ पकाते हो लाइक चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाते हो, देन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बॉन्ड विद पीपल ऑल्सो, यू नो, रूम टू रूम. आप किसी को बुला, अनजान हो कोई, आप बुला सकते हो, चलो एक कप चाय हो जाए, फिर उससे आप दोस्ती भी हो जाता है, आपका ही जो रिलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है. सो इट स्टार्टेड लाइक दैट. एंड नाउ मैं ये कोशिश करती हूँ जो ब्रेकफास्ट है मैं बनाऊँ, एंड डिनर मैं काम में आती हूँ, करती हूँ, फिर मैं सारा काम मैं कॉलेज में छोड़ के मैं जाती हूँ घर. सो दैट एट होम आई गिव टाइम टू माई सेल्फ, आई गिव टाइम टू कुकिंग, क्योंकि ये जो मैं कुकिंग कर रही हूँ इट्स नॉट जस्ट फूड बट it's going to nourish my body, not just, and my body is not separate from my mental health, they are one. So ये मैं यही कोशिश करती हूँ जुड़े रहने के लिए with the nature in the city especially. Thank you, sir. Well, thank you, Archana. Uh, very well, you have explained what you really experienced, the soothing feeling that you experienced. I would like to narrate one very small thing, what you shared yesterday, that when you were a small child in a school, then a teacher told you that see, don't demand too much from your parents, because then parents uh, you know uh, commit all wrong things to please you. They do though they go out of way to satisfy your needs. So don't demand too much from your parents. Oh, wonderful learning. What a good teacher she had in the beginning of her, school age.
we as teachers, we must learn this. That do we educate our students on these lines? Well, we have finally Nidhi Mathur, whom I have seen that she has improved so much in everything. Even I find her that her level of happiness has also gone up, and she is, a multitasking person. Okay, and never she says no to anything. uh, Wonderful, and she has been associated with our happiness class since beginning. She has been organizing all these things. Now, one thing I found in her that she has a passion for music. Okay, she enjoys singing song or something. Now, there has to be some correlation that unless you get some, kind of benefit out of doing something, you would not do it. So, what has made her absolutely free? No stage consciousness, nothing. And i- whenever she is asked, she loves to perform. So, all these things, has made me curious to know the secret of all this. First of all, thank you so much, sir, for making me a part of this brilliant panel where all the panelists talked about their association of hobbies with nature. So, be it painting, music, service, dancing, cooking. So, although, like you had said at the beginning, that I'm not a trained singer, but yes, I have been, I have been very inquisitive as far as singing is concerned. At my home also there's an atmosphere where both my parents, my sister, they love to sing at events and make joy with everyone. So, in continuation to what Miss Ishwanik talked about, the different seasons and the different rags that have been associated with each other, I would like to quote what William Shakespeare had once said. So, according to William Shakespeare, earth has music for all those who listen. The music of the natural world provides a basic foundation for the human aspects to revolutionize and evolve themselves. आजकल हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में where we are in a constant in the stage of rat race जहाँ हम एक दूसरे से compete करते रहते हैं, we are forgetting ourselves. We are not paying attention to what we actually need and desire. So I feel that nature provides that habitat where we can sit in isolation and talk to ourselves as to what we need to do, what we can achieve, and what are our needs and desires. जहाँ तक नेचर की बात होती है वहाँ हम किसी भी हिल स्टेशन जैसे मधु मैम ने कहा हर इंस्पिरेशन हैज़ बीन फ्रॉम द बीचेस फ्रॉम द हिल स्टेशंस सो इवन आई लाइक टू ट्रैवल I have been to a lot of places in India, many beaches. So the sound of the waves, the rustling of the leaves in the wind, the drop of rain. जैसे कल बहुत बारिश हुई, but किसी ने ये observe किया कि हर एक चीज़ की अपनी एक sound है. Every object in the universe, even if that object is stationary, has a sound. So हर चीज़ का एक sound है, हर चीज़ से ध्वनि उत्पन्न होती है. तो उस ध्वनि से ही हमें अपने लिए एक लर्निंग लेनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड एंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू इन द राइट डायरेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव बीन ऑल शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस. every person goes through ups and downs in life. सो इट्स नॉट नेसेसरी जब आप सैड होते हैं तभी आप नेचर के पास जाके इन आइसोलेशन अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं. इवन व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन बी अमिट्स द नेचर एंड शेयर योर thoughts, your experiences with them. I remember when I was a child, there was this movie Sound of Music, and I got deeply inspired with that movie because not necessarily the movie talked about
music, but it definitely talked about how you can relieve your anxieties, your stress amidst the nature by singing songs, by being with the nature, by helping each other, by being in the presence of those who love you and those you love them. So this is what I have to say about music and my association with music and nature. Thank you so much, sir. Well, straight from heart. Today, basically, whatever thoughts we shared here, coming straight from the heart, okay, not from the mind. Mind talks about artificial intelligence, but when we need to talk about naturalistic intelligence, then obviously heart has to play a dominant role. Okay, uh, nowadays what is happening that mind is growing at exponential rate, but heart is at a standstill. So we have to pump our heart, emotions, feelings, and that can be done only when we gain proximity with nature. So today's discussion was indeed very enlightening and very distinctive in the sense that heart had to play more role than mind. Out of our own experiences, we have been sharing our thoughts. So thank you very much. A wonderful conversation, and let us see next time we'll take up yet another important topic. Thank you.